Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is the next lesson for the AutoCAD software. I have created this beautiful looking plan with perfect formation of the layers with the proper openings for the doors, and also created doors single as well as the double doors for my plan. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है ये सारे वीडियोस, सारे lessons, do check them out. I'll put the links in the description box and also in the above I button. So for today, I will be showing you how to form 3 different type of windows. ठीक है, एक तो होगा I'm going to show you how to create 3 different type of windows. ठीक है, so let's get started and let's work over how to create these windows and to install them inside your floor plan. So let's get started. So how to create 3 different type of windows. First window, हमारा जो होगा, it is going to be a tiny window which is usually used in your washrooms. ठीक है, वो एक तरीका होगा बनाना. Second जो होगा विंडो बनाने का, वो होगा फिक्स्ड विंडो. ठीक है, जो कि आप खोल नहीं सकते विंडो को, it is just a fixed window. थर्ड जो होगा कैटेगरी में, इट इज गोइंग टू बी स्लाइडिंग विंडोज. ठीक है, तो हम ये 3 किस्म की विंडोज हम बनाएंगे. ठीक है, फॉर अवर टुडेज प्लान. सो हमारे प्लान के मुताबिक तो वी हैव जस्ट फिक्स्ड विंडोज. ओके, और बाथरूम में भी आई डोंट रियली हैव अ विंडो, सो मैं इसमें थोड़े चेंजेस करके अपने हिसाब से बनाऊंगी. सो नाउ इस केस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फर्स्ट गेट स्टार्टेड मेकिंग अ टाइनी विंडो फॉर माय वॉशरूम. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, वी गोइंग टू क्रिएट ए रेक्टेंगल. Okay, and a rectangle बनाने के लिए what I'm going to do is I'm going to use the keyboard rectangle and I'm going to use my dimension options यहाँ पे. I'm going to specify the length of my rectangle to be 0.6 meters, okay, which is 600 mm, or the width of it is going. ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया है which is of dimension. The length over here is 0.6 meters and the width of it is going to be 0.2 meters. ठीक है, so because 0.2 हमने इसलिए लिया है because we have used the width of our the क्या कहते हैं, the wall, the external wall is 200 mm. so उसी हिसाब से we have taken the width of it. ठीक है, so ये हमारे पास तो यहाँ पर create हो चुका है. I'm going to zoom that a little more so that कि आपको एक proper view आना चाहिए. And now what I'm going to do is I'm going to use my Excel line. ठीक है, I'm going to use a vertical line और मैं यहाँ पर place कर दूँगी. और यहाँ पर what I'm going to do is I'm going to offset this to be at 0.05 because I need a 50 mm jam for this particular क्या कहते हैं particular area of the window. ठीक है, और यही सेम मैं actually यही सेम को copy कर लूँगी and I'm going to place it right over here. And इसी तरह से I'm going to use the offset tool at 0.05, okay, and I'm going to offset this यहाँ से. ठीक है, and now I'm going to trim this. ठीक है, यहाँ से मैंने ये trim कर दिया है. ठीक है, perfect. यहाँ पर हो गया है मेरा ये jam of my window created. अभी now what I'm going to do is I'm going to use another accent line. Okay, तो ये हो गया हमारा ये jam of our window और अभी हम यहाँ पर window create करते हैं. So अभी what I'm going to do is I'm going to use this accent line and ये horizontal line यहाँ पर होगा and I'm going to offset this particular at 0.035. ठीक है, 0.35 होगा और it's going to be this way. ठीक है, and यहाँ पर again I'm going to offset that 0.35. ठीक है, and I'm going to trim this particular lines over here and from the jam. ठीक है, because हमें ये नहीं चाहिए. ठीक है, ठीक है, so ये हो गया है हमारा वॉशरूम विंडो. ठीक है, ये हो गया हमारा एक किस्म का विंडो. Now I'm going to do the very same for creating a sliding window. ठीक है, sliding window. So for this particular sliding window, I have created a separate video for it. और अगर आप चाहते हैं कि वो एक proper explanation चाहिए आपको sliding window बनाने के लिए, so I'll put the link in the description box and also in the above I button. So उसमें आपको detailed video मिलेगी for creating this sliding window. So do take a look over it. So next हम move on होते हैं in creating our third window, which is something which is very interesting. over here. ठीक है, so इस तरह से हमारा ये एक sliding window create हो चुका है easily. ठीक है, so इस तरह से we have to create a sliding window. Okay, और इसमें we can just make a few changes in the colors that we have to use. मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या करूँगी. ठीक है,
And now next what we have to do is we need to make a fixed window. ठीक है, fixed window. It is as simple. ठीक है, हम यही same use करेंगे. Okay, all right. I'm gonna copy this. Okay, place it right over here. And now I'm gonna use an Excel horizontal line just at the middle, and I'm gonna offset this at 0.006 ऊपर और एक नीचे. ठीक है, and I'm gonna delete this particular line. ठीक है, so और यहाँ पर I'm gonna trim this यहाँ से and ये extra lines I'm gonna move it away. ठीक है, सिंपल था. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 3 किस्म के विंडोज बना लिए हैं. फर्स्ट इज the window which is used in the washrooms, and then there is the sliding window. This is this fixed window. ठीक है, इस तरह से हमने easily बना लिया है. ठीक है, now what I'm going to do is I'm going to select all of these, and मैंने जो layer बनाया है यहाँ पर for the window, I'm going to place it inside this. ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है. बट व्हाट आई नीड टू नो इज दैट इस केस में ये जो होगा ये ग्लास होगा मेरा. ठीक है, सो ये ग्लास होने की वजह से आई एम गोइंग टू यूज ए ब्लू कलर इन दिस. ठीक है, जो कि होगा शुड आई गो सियान और ओके आई एम गो विद दिस डार्क ब्लू. ठीक है, और इसी को भी हम डार्क ब्लू करते हैं इसमें मैच टूल यूज करते हुए. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस एंड या गोइंग टू सेलेक्ट. ठीक है, सो ये हो गया. एंड दिस रेस्ट ऑफ दिस आई एम गोइंग टू मेक दिस टू बी येलो बिकॉज ये स्लाइडिंग विंडो को एक डिफरेंस दिखाने के लिए. ठीक है, आई एम गोइंग टू चूज अ येलो कलर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, ठीक है, सो ये हो गया है हमारा. ओके, लेट मी जस्ट मैच दिस. ये नहीं चेंज हुआ है, so I'm going to change that to yellow. ठीक है, so ये हो गया है हमारा एक sliding window which you can see over here. ठीक है, if you want you can actually change the color of this blue to be a little lighter. मैं अगर cyan use करूँ तो yeah, that is more peaceful for the eyes, right? So I'm going to use the same cyan color. ठीक है, so ये हो गया है हमारे पास ये तैयार. ठीक है, एंड ये हो गया है हमारे लिए which is going to be for the fixed window. और इसी तरह से same thing what I'm going to do is I'm going to use this yellow and यहाँ पर भी yellow, यहाँ पर भी yellow, यहाँ पर yellow and यहाँ पर yellow होगा. ठीक है, and I'm going to use this cyan color. Okay, I'm going to match this for both of these. ठीक है, so ये हो गया है हमारे पास ready, and now I need to make blocks for it. So I'm going to select this entire thing and I'm going to make blocks which is going to be washroom window, bathroom window. Okay, window for bathroom. ठीक है, ये हो गया एक ब्लॉक क्रिएट. दिस इज माय स्लाइडिंग विंडो. इसे भी ब्लॉक बना देते हैं. Like this. Okay, इसलिए sliding window. Okay, और इसे भी हम एक ब्लॉक बना देते हैं. This is going to be a fixed window. ठीक है, Alright, so ये हो गया है हमारे Windows formation और अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे. And in my next class, I have to show you how to create the spacing for it and to install them back. Okay, and if you can, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कोशिश करें ये बनाना. And in my next video, I want you all to be like ready with it so that एक बार आप cross check भी कर सकते हो. And then in my next video, I will go more into towards the detailings, the formation of the text, dimensions, levels, सब कुछ चीजें जो होते हैं. I would go through that. So I hope you have loved watching my video. I hope it was informative for you all. And please stay tuned up till my next video to learn even more for this particular class. If you have enjoyed it, do share it with your friends. Like my videos, subscribe my channels, and I'll meet you again in my next video. Till then, take care and bye-bye.